Let me just close the door. Yeah. So welcome everyone. I hope you're all here now. Yeah, and I would like to invite everyone to share whatever you have been reading, or maybe you have come across anything by Kabir, or even related, stuff by anybody else. Please, most welcome for you to share. Yeah, Taru, what were you sharing? Yeah, I had read this one by Rahim, and I think there was this discussion between Tulsidas and Rahim. I don't know whether it was Tulsidas, but it was a Das. तो उसमें ये है कि देनदार कोई और है, देवत सो दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, ताते नीचे नैन। तो आई थिंक जो उसका बैकग्राउंड था वो ये था कि तुलसीदास जी ने रहीम को एक लेटर में ये लिखा कोट अपना कि मैंने सुना है कि आप देते वक्त आंखें नीचे कर लेते हो, तो हाँ, आप ऐसा क्यों करते हो? फिर उन्होंने उसका रिप्लाई दिया था, बिकॉज दे तो कोई और रहा है और वो दिन रात दे रहा है, और लोग भरम हम पे करें, मतलब वो लोग को लगता है कि मैं दे रहा हूँ, तो इस शर्म से मैं नीचे कर लेता हूँ। और इसी में ना एक और देयर वाज दिस वेरी ब्यूटीफुल वन, आई थिंक आई डोंट नो हु इट वाज बाय, इसमें ऐसे कुछ था कि जैसे, और इट कुड बी अ व्हाट्सएप फॉरवर्ड, फॉरगिव मी फॉर दैट, बट आई लाइक्ड इट कि भगवान ने एज ए नोज दी है, एंड योर लवर हैज गिवन यू अ नोज रिंग. So you keep praising and showing off the nose ring, but you don't see the nose that the God has given you. yeah, इस पे वो ring लगी है. yeah. So I don't know whether it was a No, I think forward or it's some it is na. maybe from Kabir or somewhere, maybe Meera, I don't remember. I have also heard this maybe in a bhajan. हाँ, तो it was very beautiful and it's so true, right? कि कोई जैसे if we wear something nice, right? We are like flaunting it, oh, and especially, it's a gift. We Mm, make sure we tell 10 people, that's what we also see in movies and stuff. mm, But जहाँ पे है, मतलब even if you're talking about body, right? उसमें भी there's absolutely zero regard from mm, किस पे रखी है and all. Like it's mm. a good reminder. Yeah, Kind, yeah. yeah, totally. Actually, well, it's taken for so much granted, the basic body, and that you can see, that you can hear, and the basic things. They are just taken for granted कि ये तो होना ही है. तो इसलिए उस पे ध्यान, जैसे अदिति लास्ट टाइम शेयर कर रही थी, that going through physical issues, only then you realize how granted you have been, how gifted you have been anyways earlier. Yeah. एंड मुझे जो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होती है ना, लाइक स्पेशली इफ यू टॉक टू लाइक यंग पीपल, लाइक से टीनेजर्स एंड ऑल, उनमें ये काफी ज्यादा होता है कि या ऑफ कोर्स दिस इज माय राइट, Yeah. लाइक जो मिला वो तो मेरी राइट थी, और जो नहीं मिला उसके लिए आई से कि आई फील लाइक आई एम एन ऑर्फन काइंड ना, कि माय मॉम इग्नोर्स मी. तो दैट इज जस्ट लाइक इट इट्स, आई डोंट नो व्हाट, इट इंट्रीग्स मी, नो, द इट्स सेंस ऑफ कंडीशनिंग है एंटाइटलमेंट. ना. आप देखो ना, मतलब कंडीशनिंग ही हमारी ऐसी है. हमारा जब when people are growing up, when kids are growing up, the whole focus is what else can be gotten, what extra can be gotten. जो है, I think if we are nurtured in that kind of a space, कि जो है उसको to take care and maybe be responsible for that. मानुष जन्म की जब बात करते हैं, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. उसकी बात तो हम कभी करते नहीं है, हमारा समाज उस पर तो विकसित हुआ नहीं है. द होल गेम इज to get more, to consume more, and so that we become more. But we know that we never become more by achieving more, right? We all have tasted that. So where is then that completion that we are seeking? I think then we again turn the back towards the sansar and go within. While when we go within, we actually are also mastering the world in effect. It's not that we are leaving the world aside and going within. The more we get to know our own self, I think the more we get to know the world. It's just one. तो अगर कंडीशनिंग हमारी थोड़ी, जैसे अभी हम वी आर एडल्ट एनफ, और अभी से ही अगर हम वी एक्ट इट आउट इन लाइफ, वॉट एवर वी आर थिंकिंग, रिफ्लेक्टिंग अपॉन, I think it will make a lot of change in generations after us, and of course in our lives. Just one thing I read today, it थोड़ा सा मुझे उसका अभी हिंट लगा, but you were saying it was beautiful. It's by Sri Aurobindo, and कुछ उसमें उन्होंने कुछ बोला है कि for only what is involved can
evolve, है ना? इसीलिए आई थिंक these pauses, these reflections कि what is happening, who's मतलब क्या entitlement actually में है. So unless your involvement is there in yourself, evolution is not possible. Like such a simply put, है ना? मतलब कितना, yeah. Otherwise, there would be no emergence. Yeah, that was the line. Yeah, would anyone like to share? Shreya, Ravi ji, Aditi, Gurpreet ji. I don't really have anything to share. Acha, why not? Can't think of anything that I read. I mean, I just come and attend these sessions. Outside of it, there's not much reading that I do. हाय मोनिका, हाय Yes, तरु। hi. मुझे वैसे कबीर जी का तो मेरे पास कोई ऐसी कोई कविता या कोई शेयरिंग नहीं है, बट एक छोटी सी चीज शेयर करनी थी दैट यू नो दैट होल प्रैक्टिस ऑफ basking in your own glory or just feeling a little centered and rooted and so वो अभी एक बहुत मजे की चीज हुई that in you know some kind of a situation at work where lot of chaos is going on and I was able to really step back and look at it as if कि मैं कोई play देख रही हूँ या मैं कोई theater performance देख रही हूँ तो मुझे yeah so I just wanted to share कि वो that was a very empowering experience. Beautiful. So Yeah. yeah, it just that whole practice of being able to come back to your center even in the middle of the chaos. Because for me, that was one of the things which was there, which was very important. Ki it's seclusion mein to, you know, you feel spiritual and you feel aligned and all, but in the middle of the madness, can you create that feeling? So I think I've taken one small step towards it. Beautiful. So I just thought I'll share with you all. Beautiful. Yeah, thank you. I think we were sharing in that day, I think yesterday only the session that was there. I think it was yesterday, whatever. You know, that this empowerment feeling empowered is a signal that it's the step taken in the right direction. You know, you're not accentuating the ego sense of self, or you're not accentuating or perpetuating or becoming a partner in crime, perpetuating the separate sense of self rather than taking a stand as your true being. You know, I think that empowerment that you shared, that is the signal that the direction is right. So that's really beautiful. And I think one more thing is like इसको जरा दोबारा हिंदी में समझाइएगा मोनिका जी, ये क्या बताया बाद में आपने? हाँ सर, मैं कह रही थी कि जब भी हम कोई एक कदम उचित डायरेक्शन में लेते हैं, और उचित डायरेक्शन की उचित मार्ग या उचित डायरेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, दिशा, उचित दिशा में लेते हैं, तो जो हमें एक शक्ति का एहसास फील होता है, हम बहुत एम्पावर्ड फील करते हैं, वो अदिति जी जो शेयर कर रही थी, तो वो एक इंडिकेशन है, वो एक सिग्नल है, वो एक सूचक है कि मैंने जो कदम लिया है वो मेरी ईगो को नहीं बढ़ा रहा, वो मेरे सेपरेट लिमिटेड इंडिविजुअलिटी को नहीं बढ़ा रहा कि मैं कोई एक लिमिटेड बीइंग हूं और बाकी बहुत बड़ा संसार जिससे मुझे बच के रहना है, या बाकी कुछ भगवान. सो व्हेनेवर वी टेक अ स्टेप, जब भी हम एक कदम अपनी तरफ लेते हैं, अपने ट्रू बीइंग की तरफ लेते हैं, तो हमें एक शक्ति का एहसास होता है ना, और वो शक्ति कहीं बाहर से नहीं आ रही है, किसी ने मुझ बोला नहीं, किसी ने कुछ अप्रिशिएट नहीं किया जिससे मैं शक्ति फील कर रही हूँ अपने में. सो वो एक सूचक होता है कि आपका जो कदम है वो सही दिशा से आ रहा है और सही दिशा में जा रहा है. तो ये मैं अदिति जी से बात करी थी जो उन्होंने शेयर किया ना अपनी बात. थैंक यू. हाँ, या तरु, व्हाट वर यू शेयरिंग? yeah, I was saying कि जो like what Aditi shared, it's so beautiful that having lived it once, like in so much awareness, it's really then becomes much easier to do it again and again, and to whenever you're kind of feeling, you know, it's like you can go back to that moment and feel that
फ्रीनेस और द लाइटनेस ऑफ द थिंग के आई को वो भी एक पॉसिबिलिटी है एंड इट वाज माय पॉसिबिलिटी. तो उससे जो स्ट्रेंथ मिलती है, इट्स रियली ब्यूटीफुल. लाइक इट्स नॉट अ वन टाइम इवेंट इज व्हाट आई वांटेड टू से. इट्स ब्यूटीफुल टू गो बैक टू इट व्हेनेवर यू नीड दैट स्ट्रेंथ एंड फीलिंग. So, can I just add one more thing? That even while forming, so for me, emotions have played a very big role. Like everybody is, I think, but I think मेरे emotional needs बहुत ही ज़्यादा है, super sensitive हूँ और इसलिए थोड़ा sometimes I even carry like a shield with me that nobody can come so close that they can hurt me. At least ये एक coping strategy मुझे पता है कि मैंने ये use करी है. But the interesting thing now is that one of the things that you all had discussed in one of the meetings, that even new attachments, how if it makes you feel, if it just comes and goes, then it's in the right direction. It shouldn't, like, how do you know it's not becoming an addiction? कि कोई आपकी ईगो को satisfy कर रहा है, कोई आपकी वो ऐसी need meet कर रहा है जो which probably you can meet yourself, and without realizing we are taking more steps in that direction where the attachment or the relationship or the communication is becoming, I don't know how to put it, more than or less than to nahi, but वही ईगो, आई थिंक ईगो का ही एक रूप होगा वो. some part of your ego starts getting satisfied, whether it's ego entitlement or whether it is feeling good or किसी की आप help कर रहे हो, the ego which says that oh I'm needed, any of those things. तो मुझे बस लगता है कि ये एक अच्छा साइन है to know that वो बात हो गई, वो खत्म हो गई, and then are you able to come back to that space easily, or your mind is trapped in the same conversation again and again? And if you get that sign, then एक अच्छा sign है to know कि अच्छा like you need to revisit it, या उसके या फिर आप वापस अपने center पे आ सको. So yeah, I just wanted to share that as well. Aditi, I think one of the sessions I was sharing that actually वही एक बात हो रही थी कि I think Jasmine was asking one day that one becomes anxious, what if I lose my center? And I was sharing that there, that if you think that you have to hold something to be centered, then it's actually a fake thing, because it's all our center. Everything, each movement of life is center. So you can actually never be non-centered. And I have that faith that I can never be non-centered. Even when I think I am non-centered, I am actually being held. I am centered. Right. So when you say hold something, can you tell me a little bit more? What do you mean by that? That if I don't do this practice, I don't feel centered. Acha. Okay. Yeah. So these addictions also that you were sharing, that one kind of addiction, then another kind of addiction. So see, Guru ke jo vachan hote hain, words full of light and illumination, what they do is they slowly clear up the muck in us. It's almost like acid. एसिड क्या करता है, एसिड क्लियर करके नाली को, और वो नाली से निकल जाता है, वो नाली में रुकता नहीं है. नाली को हेवी नहीं बनाता वो. So the act of words of light is exactly like this, that they come to you, you listen to them, something happens, and then they go away. Then now why we say that we have to do it again and again? Because the muck is so strong. The patterns, the tendencies, the past things that are sticking to us, is that their hold on us is too strong. And that is why we say that one has to immerse oneself in these words full of light and illumination. देखो आप कुछ ना कुछ तो immersion दे रहे होगे mind को. First immersion that we all give to the mind is our own thoughts, my own stories, my own past, my own future, me, myself, me, my story, all that. This is the biggest immersion that we do give to our minds.
Now, if this has to go away because this has not been serving us well, really, thinking obsessively about myself as a separate person does not really do me a great good. So now I see I change the addiction. Instead of being addicted to the thoughts of me and myself, now I listen to those words which get me rid of me and myself. Now those thoughts again will come like acid into my being. They will cleanse me of my own self. It's almost like self-annihilation for the ego. They cleanse me of me and myself, and then they go away. So this is a worthy form of addiction. That's what we were sharing last time. I think there was something else that, Yeah, these were the words, that anything that doesn't leave its residue with you. Exactly. Yeah. और जब भी आप देखो, whenever we are thinking very strongly, obsessively about our own story, my life, my family, they stick to us. They leave a lot of residue. Thinking about me, my family, my kid, my parents, my relatives, my, they leave a lot of residues. They are very sticky in nature. चिपक जाते हैं जगह जगह जाके, and that's what the bringer of diseases in the body, because we are not living a life where we are knowing ourselves at that true being who we deeply are, but knowing ourselves as me, my story, my conflicts, all that. So we are wrongly attaching ourselves to some images, and that is a signal then in form of diseases that comes to us कि अभी भी time है, you can change. Yeah, and the other thing I wanted to stress upon, and please after that any one of you want to share, that if we take the whole life as an exploration, the whole life, the movements of my life as an explorative being, I'm now as if I'm diving deeply into the sea, and I'm trying to look what all there is, and the only thing that propels me is love for the sea. I just love being there. So what should propel us here is, first we come out of a necessity कि जिंदगी में इतनी सफरिंग है कि जाना ही पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी में. हाँ, पहले नेसेसिटी के थ्रू आते हैं, बट ज्यादा दूर तक चल नहीं पाएंगे नेसेसिटी के थ्रू. आगे जाके प्यार में पड़ना पड़ेगा. I just because this love is this path is so beautiful, I just have to be there. There is no other option I give myself. So this love for exploration of life, when it is present, that whatever movement happens in my whole life, I am there as an explorer, curious adventurer. I think then there is nothing that can take you off center. सोच के देखो, if you just explore for the fun of exploring life, if you are living life for the fun of exploring and adventuring in life, what is off center and what is non off center? Even when the off center so-called events happen, they will again become a part of exploration, right? So slowly a fear or anxiety of becoming off center also dies away, because then I see that everything can be explorative in nature. Yeah, that's what I felt like sharing. Considering how much we change, we don't have one center. Like, what is my center right now? Like, something that I fervently believe in, I might totally oppose it after 2 hours, right? Like, after a discussion, a reading, or anything. So what I'm sticking to, because there is actually not a proper, I don't know, because there are so many ways, there are so many. So I guess those sticking be, just like you say, na, if they're sticking, that is the litmus test. Because being myself and living the way I'm living, if I know my center, it seems like I would not know what the center is, right? There seems to be so much room for movement. Yeah. So it's very nice that how
we want a center everywhere, but that center also needs to be questioned. That बिल्कुल बिल्कुल. yeah, I think as long as we live as a separate self or as a ego, we will actually forever be looking for a center. But slowly, as I do not take myself as a separate self, there is no need for the center to be there, because who is there to hold the center? You know, the ego is getting dissolved. Who is there to hold the center? Only as an ego I would need कि हाँ कुछ मिल जाए पकड़ने के लिए, कुछ मिल जाए पकड़ने के लिए. Yeah, you want to share this couplet, Taru, the Harijan wala, Harijan to. yeah. I'm so sorry. I was just trying to put it in, you know, how it's supposed to be, or maybe enter press ho gaya in between the conversation. So I found it, and it was really beautiful. Harijan to hara bhala, जीतन दे संसार, हारा तो हरि से मिला, जीता जम के द्वार. मतलब as in I don't know, I found it really beautiful कि, and especially the wins and losses in our lives, in our society. मतलब ऐसे कि इससे तो तुम हार ही जाओ, मतलब kind ना, कि it's so beautiful to मतलब have, like I don't know, have never seen something like this kind कि that winning is actually losing and that losing is actually winning. So हरिजन तो हारा भला, मतलब वो हार ही जाए तो better है, जीत और संसार को जीतने दो, राइट? लाइक द विन्स दैट दे थिंक आर विन्स, लेट देम विन. अगर हार जाओगे उन चीजों में, राइट, दैट दे कॉल एज विन्स, तो फिर यू माइट फाइंड और यू विल फाइंड हरी. और जीता मतलब अगर वही विनिंग्स में ही रहते रहे तो बस फिर आ जाएंगे यमदूत हैं. बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुल. नहीं होता क्या है ना, हम मतलब जो एज यू सेड, जो सोशली एक जीत है, हमारी जीतें तो ऐसी होती है ना कि अगर बच्चे के 100% नंबर आ गए, 98% नंबर आ गए, तो वो मेरी जीत है. आई फील प्राउड इन दैट. और अगर बच्चा फेल हो गया तो वो मेरी हार है. आई टेक इट एज माई फेलियर. तो हमारी जो अचीवमेंट्स और नॉन अचीवमेंट्स हैं, दे आर सो एक्सटर्नल, है ना, कि कुछ मिल जाएगा तो मैं कुछ ज्यादा हो जाऊंगा, कुछ बाहर से नहीं मिला या कम हो गया या छिन गया, जैसे लूट हो जाती है घर में, यू नो, वी हैव रॉबरीज and they are so traumatic. Robberies are so traumatic for people that, oh my god, what have I lost? And the beautiful thing is that the whole life is spent losing the treasure that we are, and we don't even care. Oh my god, what have I lost? You know, we don't care. So वही हमारी जो, हम जिसको जीत मानते हैं, वो इतनी अजीब सी चीज है. तो वही कि जिसके पास हरि है और जो हरिजन है, वो तो हारा ही भला है. तो ये अपनी टाइप की जीतें अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए. Yeah, beautiful. I think it also reminded me, I think I've shared that before. I don't think I'm sure. That quote that like that quote from Sri Aurobindo, like, you know, how the world is running after usefulness and Yeah, ignoring the beautiful. yeah. And I hear this often, you know, कि इसका फायदा क्या है, कि जो तुम कर, you know, in general, कि फायदा बताओ, मतलब, you know, what are you gaining, right? Anything. You want this room with this view, but इस view का क्या फायदा, you know, उस view की तो appreciation होगी उस घर की. So again, it's like not something that you can verbally again even communicate, right? Like how to bridge that thing. So yeah, नहीं, so इसके बिल्कुल verbally communication थोड़ा बहुत मुझे लगता है we can give hint and clues. Why? Because when, for example, when we are on this path, जब हम अपने प्रति जागने की अब कोशिश कर रहे हैं, आप देखोगे कि we actually sense a beauty in us. So it's not something that I can avoid seeing. We all of us, whenever even a bit of moment happens where I sense some kind of, as Aditi was sharing, empowerment, you know, it's beautiful to experience that. And maybe उसकी utility के बारे में सोचने बैठे, utility भी निकल आएगी, but that would be maybe one would not even want to go there. I am feeling so content and fulfilled and beautiful also. Why would I even want to see the utility? You know, something feels right, and that is enough. yeah, and that is why, you know, that tone, like it's not that, you know, he's not trying to say कि my loss is actually my win. Mm. है ना, like हरिजन तो हारा भला.
that he's happy being, if you call him a loser, he's happy, like that is his hit. Yeah. So I was just indicating at the way it was said, that there's no negation or there's no logical explanation. Yeah. Yeah, if you think I'm a loser, I'm happy kind of being Yes. a loser. Like, And that can only happen with a Harijan. yeah. Because otherwise the ego would never be content feeling a loser. Mhm. हारा तो हरि से मिले and जीते जम के द्वार. So I think there also when we think that we have won the game of life, we have actually lost it really badly. Because if there is still a separate person who thinks that I have won the game, I think we are at a very, very wrong place. Very, very wrong place. You know, as long as this I exists, who thinks that I have won the games of life, I think that is our biggest failure, because we are not that separate I who keeps on winning and losing. And on the same side, one can also see it in this way, that जब हम हारते हैं, when we actually हारा तो हरि से मिले, when we actually face a lot of failures in life, only then we turn within. Otherwise वो सारी की सारी attention बाहर की तरफ ही रहती है कि अभी और मिल जाए, अभी और मिल जाए. तो जब हम badly we actually confront ourselves with failures, so-called failures in life, that is the very moment when we turn within. कि अच्छा ये सोचा था, ये भी नहीं हुआ, वो सोचा था, वो भी नहीं हुआ, चलो अब तो इतना सफर करें, अब तो मुड़ना ही पड़ेगा. सो हारा तो हरि से मिले. चांस ही तब डेवलप होता है जब हम बाहर की गेम से हारना शुरू कर देते हैं. मगर मोनिका जी इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शंस है. बिल्कुल बिल्कुल. कि ये तो बात बिल्कुल सही है कि जब हम लोगों को ठोकर लगती है, कहीं जुए में हारते हैं या अपने बिजनेस में हारते हैं या परिवार में कोई नुकसान होता है या कोई ठोकर लगती है, तब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं. मगर एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर. हाँ जी. मतलब सबके जीवन में ऐसा नहीं हुआ है. कुछ लोग बिना ठोकर खाए भी, बिल्कुल. हालांकि मैं उसी में हूँ जो ठोकर खाने के बाद जुड़ा हूँ, वेरी ट्रूली. मगर ऐसा नहीं है कि मतलब 99.99% लोगों के साथ तो यही है जो आप हम बात कर रहे हैं. जी, मगर एक्सेप्शंस हैं कुछ ऐसे कि जो हारे नहीं है, मगर उनको जन्मजात वो चीज मिलती है. बिल्कुल. उनका झुकाव ही उस तरफ है. झुकाव. हाँ जी, जो पहले ऑलरेडी वो पैदा ही उस चीज को लेके होते हैं साथ में. बिल्कुल. आई एम टोटली विद. तो ये ना थोड़ा कहीं कंफ्यूजन हो जाए, जैसे कि हालांकि 2 ही 3 लोग हैं हम लोग, मगर ये चीज भी क्लियर करना जरूरी है कि कहीं हम पता लगा हारने में चले गए और हम सोच रहे हैं भगवान मिल जाएंगे. नहीं, वो तो अलग चीज है. डेस्टिनी वो खैर बाद में बात करेंगे. मेरा ये सोच है इसमें. जी बिल्कुल. और दूसरा ये है कि ऐसा नहीं है कि हमें हारना ही है जीवन में. हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ. कहीं हम इस चक्कर में लग जाए कि चलो हार के. नो, आई थिंक आप अच्छा किया आपने जो इस बारे में बात करी, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं हो कि बिकॉज आई एम अ लूजर इन लाइफ आई हैव द राइट टू बी विद. हाँ, ये यस. कहीं ऐसा नहीं हम हारने में लग जाए और जीते हुए बाजी भी हार जाए, ऐसा नहीं है. बिल्कुल. हाँ. बिल्कुल. और मजे की बात ये है कि जब हम भीतर की तरफ झुकना शुरू करते हैं और एक जो जिंदगी है भीतर से बाहर की तरफ जीते हैं, तो जो बाहरी सक्सेस है वो भी साथ में मिलता है. ऐसा हो नहीं सकता कि वो मिले नहीं. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार ही हार है या लूजिंग ही लूजिंग है. भारी बट वो तब आ रहा है कि जब मुझे अब वो चाहिए भी नहीं, वो मेरी एक नेसेसिटी नहीं है. बट मनी विल ऑल्सो कम, फाइनेंसेस विल ऑल्सो कम, फेम नेम विल ऑल्सो बी देयर, बट आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑल ऑफ दैट. तो वो सब साइड इफेक्ट है उसका भीतर. वेरी ट्रू. मेरे साथ बिल्कुल 100% एग्जैक्टली ऐसे हुआ. और एक चीज शेयर करूंगा मैं. आई वाज द अंबानी ऑफ रुद्रपुर, मतलब सो कॉल्ड अंबानी. और जब मेरे को फाइनेंशियल लॉस हुआ 2003 में नियर अबाउट 7 करोड़ का, उसके बाद जो मैं आज यहाँ पे 2021 में आपसे बात कर रहा हूँ, तो लोग ये उदाहरण देते हैं कि साहब ये क्या है, ये तो सब लुटा दिया. तो मैं उनसे कहता हूँ कि जो चीज मेरे को इस वक्त अरबों खरबों की मिली हुई है, उसको आप लोग नहीं समझ सकते. और ये बात मैंने 85 लोगों से शेयर करी कि जो चीज मैंने खोई है, उसके अलावा जो उससे कई हजार मिलियन टाइम्स जो है मेरे को चीज मिली है,
उसका कोई कीमत नहीं है। और इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि ये मेरा रटा हुआ डायलॉग है कि लॉस वेगास में दुनिया की सबसे महंगी शराब मिलती है। सबसे महंगा एक जो अय्याशी का अड्डा है वो लॉस वेगास है। तो उस शराब से भी महंगी ये शराब है। ये जो शराब पी लेता है ये उतरती नहीं है फिर कभी, ये चढ़ती ही जाती है। और वो जो महंगी वाली सबसे शराब है तो वो कभी ना कभी रात में 2-3 बजे 4 बजे के बाद जाके उतर जाती है। दूसरे दिन सवेरे उसका नशा नहीं रहता है। ये मेरी अपनी सोच है और ये मैं हमेशा हर एक से शेयर करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपको नशा चढ़ा हुआ है, इसका एक एग्जाम्पल है, या तनु जी को नशा चढ़ा हुआ है, ये वही नशा है, चाहे माने या ना माने। जी बिल्कुल बिल्कुल। कबीर जी भी कहते हैं राम रस मीठो घणो, और वो कहते हैं कि मैंने एक बार पिया तो अब मुझे बार बार, इट्स Aditi was talking about addiction, so it's actually another addiction, but it's a healthy addiction, I think. Yes. Thank you. Thank you. Monica, so I mean, Taru also actually, since it's come from Taru's sharing this thought, ki, like in all of life, celebrate achievements are celebrated, right? कि बच्चे ने puzzle करी तो ताली, you know, वाह वाह, कि अच्छे number आए तो, like society in general, even if I mean, one would have, it's such a way of life that one would have to be really conscious and aware to, with a child, for example, to not promote or encourage that kind of result oriented behavior कि मैं ये, because अब जैसे इफ आई लुक इन माई सेल्फ, अब ये आदत हो गई है कि हाँ अगर कुछ कर रहे हो तो अच्छे से हो, बढ़िया से हो, परफेक्टली हो, एंड अप्रिसिएशन मिले तो बहुत अच्छा लगता है। तो आई मीन हाउ टू, आई डोंट नो हाउ टू ऑफ कोर्स I at this stage in life can try to be aware and कि मेरे अब मेरे efforts किस space से आ रहे हैं, am I doing it to make others happy or to make myself happy? But you know, how does in general with kids, how does one then live, because it's so pervasive, it's everywhere that achievements are celebrated, from anything like, you know, taking a holiday also कि अच्छा हम तो वहां गए, ये कितनी exotic जगह थी, like anything ordinary is just ordinary. There is something which is beyond ordinary, and I feel that we are all seeking that in every sphere of our life, and it's so difficult yeah, I mean, it's almost exhausting, I feel, to, if one starts thinking of things in such terms. Totally with you, Shreya, but maybe not totally. Why? Because if it becomes your life, अभी तो mental level पे एक thinking out loud चल रही है ना? If it becomes my life, it is impossible that it is not ingrained in my kids. So if life as an exploration is my life, it's impossible that when something or some other experiences happen with my kids, it's impossible that I don't take it as an exploration. It's impossible. You cannot do it. Dual उसमें नहीं जी पाओगे. And that's why you are sharing कि कैसे करें. तो अभी कहाँ है? अभी मैं हूं कि मेरी जीवन में वो नहीं है. अभी मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है जो समाज के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता लग रहा है कि इसमें भी कुछ बात है. तो इमीडिएटली एक इंसान जैसे लीप अहेड जाने की कोशिश करता है कि इसको जीवन में बच्चों के लिए कैसे ऑब्वियस बनाए. ऑब्वियस तब बनेगा जब वो मेरा जीवन होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा. एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम एटलीस्ट लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस विद किड्स, जैसे मेरे बच्चे छोटे हैं तो आई हैव टेकन enough care, in the sense I can say enough, maybe it's not enough, but because we can always do more. I think I have taken enough care that whenever failures are happening, so-called seeming failures, I have taken even more care to extract the light out of that failure, so-called seeming failure, to discuss it out, to
maybe find it out, what is the truth, why do you think this is bad, why do you think losing is bad, what happens when you win and what happens when you lose, what really happens. So I have, because this is my life, so I have taken each and every opportunity that I have seen in my limited vision, that whenever an opportunity comes, I have taken this care that it should be an exploration, and not that something really good happens and baba and party, and if something bad happens, then dart and punishment. That has been our life, but it can be something else only if it is my life. So that is what I feel, that जो मैनिफेस्टेशन में है वो तब आएगा जब वो मेरा जीवन बन चुका होगा या बन रहा होगा. Right. Yeah. I understand. Yes. So, I mean, it's a silly thing, but so in a sense, since we are talking about appreciation, I would then think ki, like everyday tasks, like if a child is sitting and completing a puzzle or eating his food, I mean, there's no need for appreciation. The appreciation should be reserved for things like, say, beauty of nature or I think इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है. एप्रिसिएशन करनी है कर दो, क्या बात होगी, मतलब वाह यार बहुत बढ़िया बनाया. But along with that, I think what people in this field, education field, also say that when, for example, a child has accomplished something, now he has already gained appreciation because he is feeling accomplishment in himself. He has already gained appreciation somewhere inside, that has happened. Mhm. If on the external you feel like appreciating, or for example, if somewhere you are looking great today, so I tell Shreya, you look lovely today, I think there is nothing, no harm in that. So I don't have to be really manipulative. If I want to express it out, I can express it out. At the same time, one has to just see that it's not becoming an addiction for the child, so that the child does only when he gets appreciation, and when no one is watching, the child is actually not motivated. हाँ वही हाँ, that's बस the इतना हल्का सा ध्यान रखना है. इफ आई कैन से ध्यान, दैट फॉर एग्जांपल होता क्या है, बहुत बार बच्चे अपने में ना क्वाइटली एब्जॉर्ब्ड होते हैं, and they are actually doing things which are really above than their caliber. They are absorbed, they are doing. I think those are the almost sacred instances which should not be disturbed. और एडल्ट्स की आदत होती है उंगली करने की, तो आसपास से निकल रहे हो, वाह बहुत अच्छा बना रहा है, और वो बेचारे का ध्यान गड़बड़ हो गया, एकदम से बाहर की तरफ चला गया ध्यान. So I think this is one thing which, for example, I usually try to take care, that if somebody is absorbed somewhere, even when he's doing a great thing, you can maybe appreciate within and not really say it when the sacred procedure is going on. I want to add something, Monica, Aditi here. Shreya, जो आप बोल रही थी about us being conditioned to celebrate achievement and we are surrounded by it. I think for me also that's something not of concern, but it's a constant work in progress. क्योंकि चारों तरफ से वही उसी environment में आप रह रहे हो. So one of the insights that I have had, या मुझे जो आजकल लग रहा है, जो बहुत actually बहुत time से लग रहा है, अब strengthen हो रहा है थोड़ा ज़्यादा, कि ये जो path है, it's very I'm not saying difficult, but it is a little it's offbeat compared to like let's say 5% लोग इस पे हैं compared to rest of the 95% या 90%. तो एक बहुत जिद की जरूरत है, और मुझे हमेशा बचपन में कहते थे ये बड़ी जिद्दी लड़की है, और मुझे अभी लग रहा है कि अच्छा ये जिद तो काम आएगी. मतलब if it's in the right direction, कि अगर ये यही मेरा सच है और ये मुझे ऐसे ही जीना है, तो फिर I can be stubborn about it, like or fighting the conditioning, या फिर doing a little bit more practice to enjoy the benefit of living this way. I think जो benefit की बात होती है ना, कि फायदा क्या है, तो इसमें शायद हमें लगेगा, हम महसूस करेंगे कि ये है, I mean यही है, तो and then probably that will see us through. That feeling will
see us through जो भी obstacles आएंगे, तो it will help us in crossing those obstacles more effectively. So yeah, I just wanted to share that thought. Thanks, Adi. या ये जो जिद आपने बताई ना, आई थिंक दिस जिद इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आप देखो बच्चे कितने जिद्दी होते हैं, how stubborn they are. And I remember cherishing stubbornness. You have seen, you have 2 kids, how stubborn kids are. But over the time I think we dilute their stubbornness, है ना, कि क्योंकि ये करना है, अब तू अपनी जिद छोड़ दे और ये कर. because that is required whatever to go about the life. तो मुझे लगता है ये जिद is actually and even there are so many things we had been sharing with Taru that there are so many words that we feel they are negative in character, but they have a lot of potential, just like you shared that one needs to be stubborn on this path. एक बार संकल्प ले लिया तो बस ले लिया, सर साहिब को सौंपते सोचा ना कीजिए सूद, not even a second thought will be given. And even if a second thought is given, it is immediately returned, when you see that yes, it is benefiting me. Maybe it's not benefiting in the criteria of the social benefits, but I don't want that. I know that I am benefited. One just knows it. या बिल्कुल. और मुझे ना मोनिका वही लग रहा है कि अगर आप मतलब मेरे 41 इयर्स के लाइफ में पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स किसी से भी पूछो, अगर एक कॉमन वर्ड निकलेगा तो ये स्टबर्न ही निकलेगा कि बहुत स्टबर्न है, जिद्दी है. तो मुझे तो लग रहा है कि ठीक है, तो ये जिद को मैं फाइनली आई वांट टू यूज इट फॉर समथिंग व्हिच इज एक्चुअली लाइक रियली नरिशिंग मी मोर देन लॉट ऑफ अदर थिंग्स हैव प्रोबब्ली. Beautiful. मोनिका, ये जो आपने डाइल्यूशन की बात करी थी कि किड्स में हम डाइल्यूट कर लेते हैं, पता नहीं, बट मैंने ये देखा है आपने बहुत सॉफ्ट टर्म यूज करा है. हाउ वी ब्रेक अ हॉर्स लाइक हु डजंट वांट टू बी कंट्रोल्ड. I feel that because I know how the world works and a 4-year-old doesn't, I would use anything like physical violence, fear, taunts, and all to just kind of conform him कि जब जिद बुरी चीज है, period. I will not even see वो किस चीज के लिए जिद कर रहा है. तो मतलब I have seen it very closely and it wasn't even conventionally bad. Still, like जो इसका बेस ही है कि उनको conform करवाना है और उसके लिए stubbornness तो तोड़नी ही पड़ती है. And it's the worst part is it's considered as good parenting. पहले तो ये इतनी जिद करता था, अब आप देखो काइंड ऑफ, अब जब मैं बोलता हूँ दुम हिला के आ जाते कि आपने एक इन एक वाइट हॉर्स को एक कुत्ता बना दिया, बट एटलीस्ट अब वो कुत्ता मेरी बात सुन रहा है तो आई विल बी प्राउड ऑफ इट. बट दैट्स व्हाट वी डू एंड इट्स क्वाइट अगली द वे वी डू इट एंड व्हाट वी डू इट एंड येट वी फील it's I should be patted on my back that my kid is he shares, he listens, जहाँ पे खड़ा है वहां पे खड़ा है. Yeah, totally. Yeah, I think it's the word that you said, it's actually ugly, it's destroying the beauty of the child. Totally. Yeah. And Imagine, thinking I'm doing the right thing. exactly. मतलब that's the worst. Yeah. I think वो तो हर ईगो की निशानी है ना, मतलब I am the right most one, that whatever I think my viewpoint is the best one. And also जैसे जब बारिश होती है, कीचड़ होता है बाहर, आप देखो कोई भी बच्चा, मुझे नहीं लगता ऐसा है जो उसकी तरफ ना जाना चाहे. Kids have instant affinity for rain and mud and dirt and all that, and we are the ones, चाहे उसको कितनी भी जिद कर ले कि बस थप्पड़ लगा दो या कुछ भी कर दो, तुझे वहां नहीं जाना. And slowly we see that they actually, it almost like we are separating them from their essence. It's like this, they are one with the universe and we are doing खींच के ये 4 दीवारी तेरा घर है, बाकी सब तेरा घर नहीं है. Don't feel comfortable there. How dare you feel comfortable in the mud? It's full of germs and whatever. And we wonder ki what happened to my kid when he becomes 20-25-year-old. What really happened? So yeah, I think it's a very sad situation. ये हम बच्चों की बात कर रहे हैं, so I don't know, can I ask a question, though I'm mindful of the time also. Yeah. Maybe you have more dohas to take. So बस एक सवाल ये था कि
so both my children, they are, I mean, of course, they are lovely children, but मुझे लगता है कि because मैं उतनी socially proactive नहीं हूँ, I'm little bit on the, I won't say introverted side, but I think मुझे time और मौका भी नहीं मिलता और इतना ज़्यादा interest भी नहीं है to be socially very proactive. तो मुझे कभी-कभी लगता है कि my children, I'm not exposing them to the सोशल जो होती है इंसाइटफुलनेस या अप एंड डाउन, तो वो बड़े अच्छे बच्चे हैं, पर वो लोगों से मतलब नए लोगों से थोड़ा वो होंगे और अपने में उनमें एक ऑकवर्डनेस है व्हिच आई फाइंड वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन अगर आप उनको ले जाओगे बाहर तो उन्हें लगे सब दे आर नॉट वेरी सोशली savvy, सो आई समटाइम्स वरी दैट अच्छा मतलब कि कल कॉलेज जाएंगे या बाहर खुद से जाएंगे, तो आई डोंट नो, आई थिंक इट्स अ मदरली वरी, बट बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट किड्स, मैं आई जस्ट थॉट आई शेयर इट विद यू. अदिति, मैं उस दिन तरु से यही शेयर करी थी कि मुझे लगता है कि जब हम किड्स को चार दीवारी से बाहर निकालते हैं, not really going out in socializing circles, because I think that there is nothing there. ऐसा कुछ आपको बेनिफिट नहीं हो पाएगा कि अगर आप रिलेटिव्स में जाके बच्चों को छोड़ दो या या शादी में जाके छोड़ दो कि जा शादी अटेंड कर, घर से चार दीवारी से बाहर निकल. Not like that, but yes, I think when we allow kids to explore different arenas, in whatever sense, है ना, maybe जैसे ये अनस्कूलिंग कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं जिसमें बच्चे मिलते हैं फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स, या मे बी प्लेसेस लाइक जैसे है ना उदयपुर में है ये दिस शिक्षांतर आंदोलन के नाम से जो है, there is another name for that anyway. So मैं ये कह रही हूँ कि exposure is always good. Why? Because it helps us break our patterns. I have seen that my kids have learned almost exponentially whenever they were exposed to some or the other kind of a different place. तो मुझे लगता है exposure, even for us, exposure is so good. For example, here we are talking 6 different people coming from different locations, sharing their whatever they have to share, and talking about things that they feel are relevant to be talked about. मुझे लगता है any kind of exposure is actually good, but one has to be, मतलब अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप उसको मैं खाने में जाके छोड़ दो for the sake of exposure, है ना. तो exposure किस तरह का हो रहा है. If it's a healthy, open-minded exposure, I think that is always good for expanding our limits, because how ego perpetuates, how a sense of limited sense perpetuates itself is by sticking in the four walls. So whenever we are throwing ourselves out, it's always it's going to do us good. We may suffer a little bit, maybe feel lonely for some time. जैसे बच्चे जब बोर्डिंग में जाते हैं या we go out for education, we do feel lonely for some time, but that's only a pattern, क्योंकि आदत नहीं है अपने साथ रहने की. तो that's a pattern कि मुझे बस लोग चाहिए नहीं तो मैं बेहोश सा हो जाती हूँ या एंग्शियस हो जाती हूँ. बट एक बार आदत पड़ जाए, then we actually, that's the only place where we love to be who we are. We almost learn to be with ourselves. Otherwise we cannot even stand ourselves. इतनी हमारी हालत खराब होती है. तो मुझे that's what I feel, that any kind of good exposure, open-minded exposure, is good for expanding our limits, because expansion is our true nature. Wideness, vastness is our true nature, and all of us in some time feel comfortable being vast and wide. Ego doesn't feel comfortable being vast and wide. Ego is limited. Yeah. Ego has to maintain its boundary. Yeah, that's what I would like to say. Yeah. Thank you. Monica, just to add on to this, you had made me aware of this around 2 years back. When we are taking kids to a new environment, it's really nice if we don't carry the whole house with us. You know how, like, okay, मेरे बच्चे को Legos पसंद है, ये वाली motorized car पसंद है, but I don't know how old the kids are, I forget. But to then be available for where we are going is also really important, and only then the new can dawn. Usually we overpack and overtake, and that kind of defies the purpose. कि वहां पे जाके भी now I'm in a 5-star का चार दीवारी with the same set of things. Totally, I think could not have said it. Yeah, really good to add that. This I only realized when we were taking our kids for example, road trips, and how really we enjoyed
when I did not carry any toys, anything, you know, apart from maybe a pen and a paper, you know, because maybe they want to draw or whatever. Otherwise, we did not have any, even the normal snacks they would had at home. And slowly we saw that we actually liked the whole culture along that road, you know, amrood mil rahe hain, wo mil rahe hain. So it's almost a beautiful adventure in itself. And yeah, that's really expanding in itself. Yeah. और अगर पूरा पैक करके साथ में चलोगे तो पैटर्न नहीं ब्रेक होगा ना, तो वही जो एज यू सेड दैट पूरा 5 स्टार साथ में चल रहा है, सो दैट डजंट देन डू द थिंग. And one thing I just came to me at the rate of what Shreya had asked about the celebration culture and stuff. But for me, I feel again it's more of a happening than a doing, because after being part of that culture for so many times and again realizing that I don't want to be here, you yourself start withdrawing. Like Abhi, last year, my nephew, he's 17, he got, I think, 97% in 12th grade. And he was due to go to a university in UK. But in maths, I think he got 96. And unki jo cutoff thi wo 97 thi. So they were very happy that he got 97 overall, but they were like, but एक mark से रह गया. Celebration था, ये था, वो था. तो when you look at it, it's just like, can you ever be happy? Kind के वो celebration में भी वो but इतना बड़ा था कि it's just like, wow, tell me more, and then next time you don't want to go, because just so it's just when you start seeing the truths of the celebrations as well, फिर वो लगता ही नहीं है कि that's some, you want to celebrate like that, or you want to motivate for that or work towards that. बिल्कुल बिल्कुल. Yeah, so let me share this couplet. करनी करे तो क्यों डरे और कर ही क्यों पछताए, तूने बोया पेड़ बबूल का फिर आम कहाँ से खाए. So I think this would I took it as कि हमारा जीवन जिस तरह से दिखता है कि जीवन की क्या हालत है, वो कर करके ही हालत हुई है. कि जो जो अभी तक हम करते आ रहे हैं उसका ये रिजल्ट है कि मेरा जीवन आज इस तरह का है. And we know that many a times we don't want to be there, we wish that maybe something would change, but alas, without our efforts nothing changes. So what is the effort then required? The effort is to look at what all I have been investing myself into, which produced this kind of a life. क्या 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 कर करके आज मेरी हालत ये ऐसी हुई है. And many a times people ask, what should I do in order to have a good life or whatever. And the thing is that we don't have actually to do much. We have to let go of all those doings which have led us into this place. Where all have I been investing my energies which has created such a scene in life? What all did I give priority to that I see myself here where I don't want to be really? So it seems that इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, इतना अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट एक बार चेक कर लें कि क्या इतना इन्वेस्टमेंट इन सारी जगहों पे जरूरी है. क्या अभी भी मैं ये करना चाहूंगी? क्या दिया इतना सब अपने आप को इन्वेस्ट करके इन सारी जगहों पे क्या मिला मुझे आज, मैं कहाँ पे हूँ? सो फायदा बिल्कुल देखना चाहिए, एज वी वर शेयरिंग अर्लियर, फायदा बिल्कुल देखना चाहिए. क्योंकि अगर इफ एनीथिंग on this earth is helping me become more aware of my own being, तो वो मेरा फायदा है और मुझे अपना फायदा जरूर देखना चाहिए. Because each one of us at the end of the day
after every effort, after every struggle, wants only contentment, peace, and happiness. That is a common crux that all of us kind of point towards. We would not really want to be in these sessions, for example, if they did not, if they made us miserable. If the attending the sessions made us miserable, why would I want to be in the sessions? If attending the sessions points me towards peace and truth, maybe only then I'll be actually able to push myself. So I think that's where we have to reflect more and more, and that's why I chose this for today, that करनी करे तो क्यों डरे और कर ही क्यों पछताए, तूने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए. We get what we have reaped, right? We have sowed. Whatever we sow, we reap. So right now, can I be aware what am I sowing? Right now, can I be aware कि मैं जो भी एक्शन कर रही हूँ, जो भी वर्ड्स बोल रही हूँ, क्या वो मेरे को एज एन ईगो परपेचुएट कर रहे हैं या उसका खात्मा कर रहे हैं? वेयर एम आई कमिंग फ्रॉम? क्योंकि वो एक सीड हो जाएगा जो मैं बो दूंगी और उसी का रिजल्ट मुझे अभी और बाद में मिलेगा. जी रवि जी. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ वैसे ही. ओके ओके, आई थॉट यू वांट टू शेयर. ओके, बड़ी अच्छी बात कही है आपने वैसे ही, कि एक्चुअली मैं तो खास तौर से जब भी बोलता हूँ ऐसा लगता है ईगो से बोल रहा हूँ, तो हम एक तरीके से ऐसा लगता है कि हम अपने लिए एक परेशानी खड़ी कर रहे हैं. चलिए ठीक है. जी जी जी. Monica, I feel that even in say absolutely everyday materialist like things, like regular day-to-day things, also this would come in. I mean, this would bring so much light. And it's like say I have a young kid and I need a help, right? And I get a help. But then everything that the help does annoys me, right? And then I keep first I complain I have a kid who is hard to manage. Then I complain it's so hard to get a help. And then when I get a help, I complain that oh my god, the help does this, 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 this. So it's like I never, I don't know, I get what I ask, I do the progress for it, but process for it. But when I get it, I'm so busy saying कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके साथ ये भी issues होंगे. Like if I buy a BM and उसकी 80,000 की सर्विस है, मैं BM में I'll be very happy, but जब सर्विस में मुझे every time I have to pay that amount, I'll be like, oh my god, this is too much types ना. So again, seeing the complete picture, right? Like जैसे ये बोल रहा है कि अगर वो बोया है तो वो निकलेगा भी वही. So if we even I'm seeing this more and again see the whole picture और बिल्कुल बेसिक को छोड़ के थोड़ा सा भी एक देख लेंगे इसका फुल इम्पैक्ट क्या होगा, जिसमें इतना दिमाग भी नहीं लगता. इट्स क्वाइट राइट, लाइक ऑब्वियस कि अगर ये है इसके साथ ये आएगा, एसी लिया उसके साथ मेंटेनेंस करानी पड़ेगी. यू नो हाउ एवरीथिंग कम्स विद बैगेज, सो यू एक्सेप्ट द होल कॉइन विद द हेड एंड द टेल. आई थिंक वही बात है कि आप देखो ना, कंप्लेंट जब हम करते हैं, सेंस ऑफ सेल्फ कितना एग्रेंडाइज्ड फील होती है. So ego loves to complain, and I think that is one of the reasons where mother has shared that if you cannot change anyone outside any person, first of all don't complain, and if you can change, make the action, make it happen. So because otherwise complaining, and in the rut of complaining, it's just the ego that I am feeding, and it's almost again going to the second line, then I am actually sowing the seeds of ego, and what I will end up getting is the misery of the ego. And then it also, I think the first line would also talk about owning your experiencing, whatever your experiences are in life, even if they are so-called mistakes and failures. I don't think there is ever a mistake or a failure, but yet for just a matter of sake, if we say owning our mistakes and failures in life, करनी करे तो क्यों डरे.
और डर ही क्यों, कर ही क्यों पछताए. So also owning whatever we have been doing with ourselves in our life, and once we make this shift that I own my life completely, I own whatever I have done, I have got an experience through it, I think then guilt also cannot be there, you know, guilt or shame or being victimized, all that cannot be there once I own the whole experience. And in owning, I mean to say that yes, taking it as an experience in life and nothing more, you know, just that. So that also kind of sheds away the burden of guilt, shame, and कि मैंने सोचा था और सोचा क्या था, हो क्या गया, you know, all that. So that would be just taken off. हाँ, सोचा था, उस समय इतनी समझ थी, इतना सोचा, और अब मैंने ये पूरा एक्सपीरियंस कर लिया है, और अब मैं तैयार हूँ to enter into the next phase of life. So this complete owning of experience, I think that also is very empowering. Once you know that yes, I own my mistake, I own my failure. So maybe I'll take up a last couplet from my side. If anyone wants to share, welcome to share. This one. राजा दुखी, सन्यासी दुखी, अमीर दुखी, रंक गरीब दुखी, कहे कबीर ये सब दुखी, सुखी संत मन जीत. You know, I think we all are aware कि जो दुख है वो किसी को छोड़ता नहीं है. दुख सबके जीवन में है, और दुख आता ही इसके लिए है, बताने के लिए कि आप जो अपने आप को समझ रहे हैं, आप वो नहीं हैं. आप वो नहीं हैं. अगर आप अपने आप को एक रोल समझ रहे हैं, एक कैरेक्टर समझ रहे हैं, आप वो नहीं हैं. यू नो, अगर आप अपने आप को एक मदर, एक वाइफ, एक डॉटर समझ रहे हैं, आप वो नहीं है. तो अगर मैं एक अच्छी मदर, अच्छी वाइफ बनना चाहती हूँ, मैं फॉरएवर परपेचुअली दुख में रहूंगी, क्योंकि मैं वो हूं ही नहीं. इट्स ऑलमोस्ट अ केस ऑफ रॉन्ग. I think there was this movie, The Man Who Mistook His Hat for Wife, something like that. So it reminds me of that, you know, कि हम अपने आप को जो समझ रहे हैं वो हम है नहीं. और इसलिए ये दुख एक सिग्नल बन के आता है, एक लाल बत्ती बन के आता है कि पहचानो कि तुम कौन हो, पहचानो कि तुम ये लिमिटेड पर्सनैलिटी, लिमिटेड इंडिविजुअलिटी नहीं हो. सो राजा दुखी, सन्यासी दुखी, अमीर दुखी, रंग. सो जिसके पास बहुत ज्यादा है भी अगर सोशली, वो भी दुख में ही पाया जाएगा. उसको भी एज तरु वाज शेयरिंग, कुछ ना कुछ रोने का बहाना मिल जाएगा. ईगो लव्स टू क्रिब अबाउट थिंग्स, यू नो. इवन whenever we have phases in life where we are drenched wet in ego, you know, me and my story, we see that then we love to crib about things, you know, we love to complain about things. तो चाहे कितना भी सोशली भी आपको मिल जाए, बहुत भरे पूरे हो, राजा को अब किस चीज की कमी है, बट वो भी दुखी है. रोने का कोई ना कोई बहाना उसको भी मिल जाएगा. राजा दुखी, सन्यासी दुखी. सन्यासी क्यों दुखी हो सकता है? कोई ना कोई कारण बना लिया कि संसार ये बेकार है, और वॉट एवर, यू नो, कि मेरे को वो मिल नहीं रहा, आई एम नॉट गेटिंग एनफ योगिक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस. एनीथिंग कैन बिकम अ मैटर ऑफ क्रिबिंग एंड क्राइंग. राजा दुखी, सन्यासी दुखी, अमीर दुखी, गरीब दुखी, कहे कबीर यह सब दुखी, सुखी संत मन जीत. वाय मन जीत? ऐसा इंसान जिसने मन को जीत लिया. मन को जीता नहीं जा सकता, मन को सिर्फ समझा जा सकता है. मन को उसके सोर्स की तरफ टर्न किया जा सकता है. एंड आई थिंक दैट इज वाई ऑल दीज एक्सपीरियंसेस, जिसमें हम बहुत ज्यादा पिटते हैं जीवन में, बहुत इधर उधर से थपेड़े पड़ते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं. अदरवाइज मन सिर्फ बाहरी चीजों में उलझा रहता है. उसको लगता है यहाँ से कुछ मिलेगा, यहाँ से कुछ मिलेगा, मिलता कुछ नहीं है, बस कंगाली ही आती है. और जैसे ही मन अपने सोर्स की तरफ मुड़ता है, it almost gets dissolved in the source. It realizes that there was nothing lacking in the very first place. And that's why my begging bowl almost never got filled, because I was just trying to fill up a mirage. Mirage cannot be filled up.
तो जिसने मन को जीत लिया, जिसने मन को समझ लिया, पहचान लिया, जिसने मन को उसके सोर्स की तरफ टर्न कर दिया, अब उसका मन भूखा नहीं रहा। एक वो जना है जो सुख में रह सकता है। और ये किस टाइप का सुख है? ये सुख है immersion in your own self, immersion in your own being. You are content in your beingness. Now becoming will happen. Becoming will happen. It will become more and more a part of my life. Becomings will happen. But in my beingness, I have found myself. I'm not trying to find anything in the world. And that is where हम दुखी होते हैं, क्योंकि हम बाहर कुछ ढूंढ रहे होते हैं. So that's what I kind of resonated with this, because it's the turning of the mind towards its own source, which is full of contentment and fulfillment. Otherwise, the mind just keeps on looking like a beggar throughout the world, and it never finds it almost. And then it becomes almost a responsibility for each one of us to use the hammer of dukh or pain or suffering, to use it wisely, so that turning can happen, so that the reality check can happen, so that I can use the signal of pain and suffering to now be who I truly am, and to live who I truly am, live as that awareness, and stop feeding the ego in the process. Yeah. Okay, so anything, anyone? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आज. Namaste. हाँ, thank you Ravi ji. आपका भी sharing. Thank you for coming and sharing. Thank you so much. So shall we call it a day? If there is nothing. Thank you. Thank you, Monica. Thank you, everyone. Bye.